everyone, so let's move towards our today's topic, which is one of my favorite topic ever in my MBBS and in my medical studies. The most favorite topic of mine is heart. So heart basically the conical in shape, and it is a muscular pumping organ. Their muscles are called as cardiac muscles, and those cells are known as cardiac myocytes, cardiomyocytes. Okay, remember, heart is a vital organ, okay, and it is situated behind the sternum, and in which part of mediastinum? In middle mediastinum, okay, and it is enclosed in pericardium. What is pericardium? It is another lecture which is also present in the recording, and I have already recorded that lecture, so you can listen that from that recording. हार्ट इज प्लेस्ड ऑब्लिक इन पोजीशन. अगर आप देखोगे तो हार्ट सीधा नहीं होता, हार्ट थोड़ा उर्दू ज़बान में उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं टेढ़ा, तो ऑब्लिक इन इंग्लिश, तो ऑब्लिक पोजीशन में होता है. जो 1/3 ऑफ हार्ट है वो राइट कार्डियक नॉच में होता है, जबकि 2/3 ऑफ हार्ट यानी रिमेनिंग हार्ट लेफ्ट कार्डियक नॉच में होता है. इसकी जो साइज़ है वो 12/9 सेंटीमीटर होती है. जो वेट है फीमेल्स में वो 250 ग्राम होता है, जबकि मेल्स में 300 ग्राम्स होता है. इसके 2 चैम्बर्स होते हैं. देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट, 2 atria also called as auricles, so 2 auricles and 2 ventricles, and atria pump the blood into ventricles, and ventricles pump the blood into the circulation. There are 2 types of circulation: systemic circulation and pulmonary circulation. Pulmonary circulation, that the blood goes into the lungs for oxygenation, then it returns back to the left atrium, then from left atrium they will go to the left ventricle, and from the left ventricle they will go to the aorta for systemic circulation. And systemic circulation is the circulation to supply the blood to whole body. So I've already told you the circulation as well. Now the atria inside the heart, the atria are separated by a groove, and that groove is known as interatrial groove. The ventricles are also separated because the right ventricle and the left ventricle is also separated from the with each other by a groove known as interventricular groove. The atria, the left atria, left ventricle, and the right atrium and the right ventricle are also separated by a groove known as atrioventricular groove. Okay, that groove is also known as, that is, and atrioventricular groove is also known as coronary sulcus. Coronary sulcus basically is a pathway for the coronary arteries as well. Okay, now like we were talking in the locomotor module and the respo module के sternum और बोन्स वगैरह की हमने पढ़ा के बॉर्डर्स कितने हैं, सरफेस कितनी है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट. तो लाइक दिस वी ऑल्सो स्टडी द हार्ट एज वेल. हार्ट का एपिक्स जो है वो फॉरवर्ड और डाउनवर्ड साइड पे होता है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पर होता है, ठीक है. जबकि जो बेस ऑफ हार्ट है वो posterior surface भी कहलाती है, और that is from the level of T5 to T8. T5 means thoracic vertebra, and 5 and till thoracic vertebrae 8. Okay, 8 thoracic vertebrae till 5th thoracic vertebrae till 8th thoracic vertebrae. And base of heart consists of pulmonary veins, vena cava, aorta, and as well. Now how many borders are there in the heart? There are 4 borders. First of all, upper border. Upper border is slightly oblique in nature, and or not in nature, slightly oblique in physically, and it consists of 2 atria. Okay, upper border having 2 atria. You can also say that atrium as well. ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम मौजूद होते हैं, वो अपर बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है. जो इन्फीरियर बॉर्डर है वो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम बनाती है. रिमेंबर वन मोर थिंग, दे विल ऑल्सो कनेक्ट विद द डायाफ्राम एज वेल, ठीक है. ये जो इन्फीरियर बॉर्डर है वो डायाफ्राम के साथ कनेक्ट होगा. जो राइट बॉर्डर है वो राइट एट्रियम बनाती है, ठीक है. अपर बॉर्डर हो गया इन्फीरियर बॉर्डर. इन्फीरियर बॉर्डर को आप लोअर बॉर्डर भी कह सकते हैं.
राइट बॉर्डर राइट एट्रियम बनाएगी, जबकि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप बोले कि राइट बॉर्डर राइट एट्रियम बना रही है तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट बॉर्डर बना रही है, नहीं, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट वेंट्रिकल बना रही है, ठीक है। अच्छा, राइट बॉर्डर कैसे बनता है? राइट एट्रियम से बनता है, एंड फ्रॉम सुपीरियर वेना कैवा टू इंफीरियर वेना कैवा there is a border known as right border. Left border will form by, like I said, left ventricle. Now moving towards the surfaces. What are the surfaces of the heart? There are three surfaces: anterior surface, which is also known as sternocostal surface, which is formed by right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Okay, and remember one more point: the uncovered, because usually the anterior surface or the sternocostal surface is covered by the lungs, but the uncovered area, जहाँ पर lungs covered नहीं होती, उस area को कहते हैं cardiac dullness. Okay, now moving towards another surface, that is inferior surface, and it is also known as diaphragmatic surface. It is formed by right atrium, right ventricle and left ventricle. Okay, यही बात याद रखिएगा। और लेफ्ट सरफेस कैसे बन रही है? लेफ्ट सरफेस लेफ्ट वेंट्रिकल से बन रही है। लेफ्ट बॉर्डर और लेफ्ट सरफेस, ये दोनों चीज़ें, अगर बॉर्डर में बात करें लेफ्ट बॉर्डर की तो लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा था, अगर लेफ्ट सरफेस की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा है। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल विल फॉर्म लेफ्ट सरफेस एंड इट कंसिस्ट ऑफ phrenic nerve, coronary circuit as well. Okay, so basically these all the structures are features are the external features. We will talk the internal features in our next video, inshallah. So stay connected and stay tuned. We will talk right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle in detail, separately, individually. So stay connected, and obviously अगर आपने ये रिकॉर्डिंग सुन ली तो आपके लिए वो रिकॉर्डिंग सुनना बहुत आसान हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। ओके, so guys, take care of yourself and study hard, work hard, and good luck. Bye.